Hello, friends. Good morning. A very warm welcome to another edition of Commodity Market and Forex Analysis with SD. I'm SD Shanando Das. I'm a multi-asset trading and investment specialist with more focus on currency, commodity, and global macro. तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आई पोस्ट रेगुलरली टू डिस्कस व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द कमोडिटी मार्केट एंड forex market. This will act as a video log for me if I want to go back in past. Plus, this will help the learners जो मेरे साथ associated हैं. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं if you go to Elan Markets and through SAA. And if you type my name, you'll see there is a flagship program, multi-asset trading mentorship program. This is one of the best flagship program from Elan Markets, and उसमें this master class on advanced commodity and currency उसका पार्ट है. आप मेरे साथ जुड़ सकते हो. And इसके अलावा there are some other courses where you can get direct access to my trading setup जो है उसका direct access आप ले सकते हो. तो ये जो वीडियो है ये हम लोग करेंसी एंड कमोडिटी को देखेंगे. एंड सबसे पहले जो करते हैं वी गो टू द इकोनॉमिक कैलेंडर एंड लुक एट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेटा एंड इवेंट्स कमिंग अप. सो उसमें 2 स्टार वाले इवेंट हम लोग चाहेंगे, नथिंग लेस देन 2 स्टार. सो यहाँ पे कल जीडीपी का डेटा आया था, मिक्स डेटा आया था. मंथ ऑन मंथ डेटा वाज स्ट्रॉन्ग. ईयरली डेटा इफ यू गो, वेयर इज द ईयरली? If I select the 1 star, probably तब जाके वो लोग दिखाएंगे. This is GDP year on year. It declined minus 0.3%. But just जैसा consensus था वैसा ही expected है. But ultimately this means that UK का जो economy है वो अभी भी weak है. That is bearish news for pound. But mixed data की वजह से GBP kind of mixed range bound था. जो प्रोमिनेंटली दिख रहा है चारों तरफ, दैट इज डॉलर वीकनेस. डॉलर का सेल ऑफ डेफिनेटली दिख रहा है. दैट इज यूरो वाज स्ट्रॉन्ग. कल यूरो में री एंट्री आया था इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय चार्ट्स. सो डॉलर का वीकनेस इज समथिंग टू लुक एट. आज एक इंपॉर्टेंट डेटा है, दैट इज यूएस का रिटेल सेल्स डेटा. This data is likely to add some volatility on the dollar. Not a major data, but this will be one round of important data. और कोई खास important data this week है नहीं, because this week is relatively dry. Next week बहुत important है. Wednesday Federal Reserve का interest rate decision आ रहा है. उस दिन से मेरा 2 दिन का लाइव मैराथन चालू हो रहा है. आई होप यू ऑल विल बी ज्वाइनिंग इन, जो मेरे लर्नर्स है ऑलरेडी. सो ये रहे डेटा की बात. कुछ खास नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पे हम लोग को रिलाई करना पड़ेगा. वी कैन हैव अ लुक एट कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है करेंसी का. लेट्स गो टू फोरेक्स. एंड आज दिख रहा है कि ऑन द अप न्यूजीलैंड डॉलर इज अप, वेयर एज यूरो ऑन द वीकनेस साइड. ब्रॉडली काइंड ऑफ अ फ्लैटिश मार्केट अभी तक जितना दिख रहा है यहां से. We'll go to ट्रेडिंग व्यू. ट्रेडिंग व्यू एज एन ऑसम चार्टिंग प्लेटफॉर्म, और उसमें मैं इस्तेमाल करूंगा मेरा सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड. उसके लिए मुझे चाहिए एसडी रेनबो वेव वर्जन 1 एंड एसडी आरएसआई एक्स. इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाके, जो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं. फर्स्ट आई विल यूज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड और द मदर सेटअप. यहाँ पे फाउंटेन ऑफ गोल्ड इज द मदर सेटअप, उसका इस्तेमाल करेंगे. एंड विल टेक ए लुक एट द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करेंसी ट्रेडिंग के लिए. सो करंट वही हम लोग दिख रहा था कि रेट्स आर राइजिंग. रेट्स आर स्टेडीली राइजिंग सिंस द इन्फ्लेशन डेटा ड्रॉप नहीं हुआ. एवरेज 3 मंथ एक्चुअली बढ़ गया है. कोर इन्फ्लेशन, सॉरी, हेडलाइन इन्फ्लेशन 3 मंथ एवरेज एक्चुअली हायर. सो जब से ये डेटा आया है, मोर ओवर दिस इंटरेस्ट रेट का ऊपर प्रेशर है ऑन द अपसाइड, क्योंकि फेडरल रिजर्व नाउ एक्सपेक्टेड कि ज्यादा टाइम हायर इंटरेस्ट रेट होल्ड करेगा. सो जनरली स्पीकिंग दिस हायर इंटरेस्ट रेट शुड बेनिफिट द डॉलर. बट हम लोग जो अभी तक देखे हैं कि ये जो राइजिंग में डॉलर कुड नॉट गेन मच. सो
एक तरफ डॉलर डिवैल्यूएशन है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट सपोर्ट, सॉर्ट ऑफ अ मिक्स सिचुएशन फ्रॉम द बॉन्ड फंडामेंटल की करेंसी के तरफ। 10 ईयर इंटरेस्ट रेट भी रिकवर कर रहा है, इसमें वी डोंट हैव फुल ग्रीन कैंडल। इफ यू आर इनटू टीएलटी, it is a good time to do some partial exit or wait for further sell off to add to the TLT। ये जो लेवल था इसका सपोर्ट लेके वापस आ रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। वंस ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, ये यील्ड कर्व कैसे बिहेव करता है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इफ वी सी अ बियर स्टीपनिंग ऑफ द यील्ड कर्व, बियर स्टीपनिंग होता है जब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट गोज अप फास्टर देन द शॉर्ट टर्म and overall interest rate curve is rising. So bear steepening case में we are likely to see a comeback, strong comeback of the US dollar। तो इसके साथ साथ हम लोग चले जाएंगे करेंसी मार्केट में। करेंसी मार्केट में फर्स्ट विल टेक अ लुक एट द डॉलर इंडेक्स। ये जो कैंडल्स, ये जो सेटअप है, ये जो कैंडल है, इसके जरिए मैं ट्रेड करता हूँ। So that's why I largely do not refer to the normal candlestick. These are awesome candlesticks, as good as the normal candlesticks. So this is after a green socks, a full red candle, a chance of re-entry। pressure है डॉलर के ऊपर, ये लेवल अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। So that means dollar will remain in a bearish consolidation। consolidation probability देखिए 35 और sell trade win probability somewhere projected 68, whereas buyer का only 3%। मतलब ये हो गया ऐसा मार्केट सेल बायस्ड रेंजिश, तो नेचुरली ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स यहाँ पे है। सो ये जो स्ट्रगल है, आई थिंक इट विल कंटिन्यू, एंड वर्स्ट केस में इट कैन कंटिन्यू टिल द फेड। नेक्स्ट मेजर मूव फ्रॉम द फेड विल डिसाइड व्हाट्स कमिंग फॉर द डॉलर, which is next week Wednesday night। अब हम लोग इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। यूरो यूएसडी में कल री एंट्री का चांस मिला था। दिस वाज अ फुल ग्रीन कैंडल यस्टरडे, विच इज विद इन 2 रेड कैप। अगर बाई ट्रेंड अच्छा है तो विद इन 3 रेड कैप्स सिग्नल आ जाएगा बाइंग का। सो आफ्टर 2 रेड कैप्स वी गॉट अ बाई सिग्नल, आज और भी ऊपर जा रहा है। सो लार्जली आई विल लुक फॉर फर्दर एडिशन इनटू यूरो यूएसडी, प्रोवाइडेड ये थोड़ा 1.095 के ऊपर जाए, क्योंकि कल ऑलरेडी मेरा री एंट्री हो चुका है। सो मार्जिनल प्रॉफिट में है वो री एंट्री से। So I want further the trade to move into the profit। ये जो white cross, I want it to move above the ये जो line है और orange line, flat line, इसके ऊपर move हो जाए, will add more quantity long on the euro USD। कैंडल दोनों साइड बढ़ा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, वी माइट सी बोथ साइड ड्रॉ डाउन। अगर आप, इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ड्रॉ डाउन्स इन करेंसी ट्रेडिंग इन लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग इन drawdowns like these what we saw are very common in the forex market। This should not bother your psychology, it is bothering either because you are not familiar or you have taken very large position without understanding the forex। So euro USD में मेरा bullish outlook, I'll look to build further position। GBP USD 70% exit के बाद I'm waiting, I did not get a full green candle yet, so waiting for a full green candle। once it comes then I'll think what about possibly आज आ सकता है, आज हम लोग एक थोड़ा और पोजीशन बढ़ा सकते हैं इन द GBP USD। 30% है, we can increase it to 40% of 50% of the total GBP USD capacity। फिर हम लोग जा रहे हैं यूएसडी जेपीवाई यानी डॉलर येन। डॉलर येन इज अंडरगोइंग अ करेक्शन, इट इज स्टिल नॉट रेडी टू एंटर शॉर्ट पोजीशन, मार्केट इज इन अ बियरिश कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर जितना आई होप यू ऑल न्यू दैट आई एम ऑलरेडी होल्डिंग लॉन्ग पोजीशन। हम लोग डिस्कस किए कि आई विल नॉट बी स्क्वायरिंग ऑफ इन द करेक्शन। आज एक फुल ग्रीन कैंडल है, आई विल बी माइंडफुल। 11:30 के बाद, more of 12:30 के बाद, when European markets will start opening up, after that I'll take a close look। if it's a green candle लग रहा है कि persist करेगा, I will re-enter GBP INR। यूरो आईएनआर में कल एग्जिट हुआ था हम लोग का इससे पहले, बट यूरो आईएनआर फिर से एक री एंट्री का मौका दिया था कल।
रेड कैप्स के बाद फुल ग्रीन कैंडल था जब अपना क्लोजिंग हो रहा था, सो हियर वी कुड इंक्रीज पोजीशन। आज भी बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बट वी आर वेरी क्लोज टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस, सो बेटर जो पोजीशन है उसको लेके देखे कैसा मूव हो रहा है, बिकॉज वंस द रेजिस्टेंसेस आर क्लियर ये लेवल को वी कैन ऐड एग्रेसिवली टू द लॉन्ग साइड। फिर हम लोग जा रहे हैं जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर आई एम होल्डिंग लॉन्ग पोजीशन, यू ऑल नो दैट, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। एंड उसमें जो करेक्शन हो रहा है ये भी मुझसे बहुत एक्सपेक्टेड था। आई एम अवेयर ऑफ द करेक्शन, इसके बारे में हम लोग बात किए कि देयर विल बी अ करेक्शन लाइकली। सो अब मेरा री एंट्री का चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैकग्राउंड येलो हो जा रहा है आई एग्जिट नो मैटर व्हाट। सो बट यहाँ पे फिर से री एंट्री के लिए जो अलर्ट मुझे डालना पड़ेगा, ऑल्ट ए, और उसमें जाके एच डी रेनबो वेव वर्जन 1 सिलेक्ट करके, ये जो एच डी रेनबो वेव वर्जन 1 सिलेक्ट करके प्राइस एक्शन बुलिश यानी फुल ग्रीन कैंडल उसका अलर्ट लगा दीजिए एंड योर ट्रेडिंग इज ब्रॉडली डन। नेक्स्ट जो यूएसडी आईएनआर आई सिग्निफिकेंटली स्क्वायर्ड ऑफ, आई वाज एक्सपेक्टिंग मच बिगर गेन इनटू दिस। फिर ओरिजिनल बहुत दिन बाद ऐसा बैकग्राउंड रेड वीकनेस दिखा था, और ये जितना देर तक सस्टेन कर रहा है ऐसा सस्टेनेंस हम लोग नहीं देखे अनलेस 2022, जैन 2022। तो ये सेल जो है दिस इज सिग्निफिकेंट। I will continue to hold position into this, but I've reduced. Why? The reason is the way the move I was expecting in non-farm payroll, which was dollar negative, then it did not work out. US inflation was a dollar positive event, so it did, I will, I mean, more of an interest rate positive event tha, US inflation. So that's not really good fundamentally for INR. So INR may drop, USD INR और गिर सकता है, इसीलिए पोजीशन होल्ड करूंगा बट नॉट एज मच। आई वाज वेरी एग्रेसिव, इट इज इन प्रॉफिट क्योंकि हम लोग जल्दी स्टार्ट किए थे अबव 83, but this is, I'm cutting down my expectation. I usually do not trade this pair because it is very much rangish. एक ट्रेंडिंग, एक ट्रेंड प्लेयर जैसे मेरे जैसे ट्रेंड प्लेयर के लिए इट डज नॉट लीव मच यूएसडी आईएनआर, बट दिस वीकनेस जो दिख रहा है बहुत दिन बाद, आई वांट टू फील इट विथ फुल फोर्स, दैट्स व्हाई आई विल कीप हैविंग द सम ऑफ द पोजीशंस। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं पाउंड येन एंड यूरो येन। पाउंड येन आफ्टर जो मार्जिनल लॉस लास्ट टाइम लगा था, हम लोग बात किए थे कि वी आई शॉर्टेड बेस्ड ऑन द रेड बैकग्राउंड, इट डिड नॉट वर्क आउट। उसके बाद से आई हैव नॉट टेकन एनी पोजीशन, आई एम वेटिंग इट आउट। यहाँ पे जीबीपी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, येन इज स्ट्रॉन्ग, तो पाउंड येन में कुछ खास नहीं हो रहा है। Similarly, euro yen हम लोग पोजीशन नहीं लिए थे because euro fast moved and reached the target. But since then, I'm sitting idle on euro yen. I'm waiting for the right moment, right signal, and then I will enter euro yen and pound yen. जिसमें मैं हूँ that is the dollar, that is the gold. Gold में I have been bullish. गोल्ड फिर से एक री एंट्री का मौका दिया है। मैं 125 मिनट्स में फाइन ट्यूनिंग करता हूं। सो 125 मिनट में जो दिख रहा है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल जिसका बेस बना रहा है गोल्ड। सो दिस ग्रीन इज शॉर्ट ट्रेंड बुलिश, आई हैव री एंटर्ड, सो आई विल वेट फॉर द गोल्ड टू सी व्हाट हैपेंस। अगर इसका ब्रेक हो जा रहा है 22,000 2200 और हायर, वेरी लाइकली विल बी द टारगेट। स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है एक्सचेंज यूएसडी, हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि मूव हो सकता है बट इट इज मोर ऑफ अ रेंजिश। मेरा मेन फोकस तो गोल्ड है, बट सिल्वर में भी मैं पोजीशन इंक्रीज किया हूं। 24 पे एंट्री के बाद दिस इज द कैंडल वेयर यस्टरडे आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग पोजीशन इन सिल्वर, but I'm not as confident as gold, but silver इसमें position increase करना ही पड़ेगा because the trade has moved to the in means ट्रेंड के साथ, मतलब ये जो लॉन्ग ट्रेंड है उसके फेवर में चला गया है ट्रेड। एंड ये जो लेवल है दिस लेवल इज ऑलमोस्ट रीच, ये देखिए ये लेवल ऑलमोस्ट रीच कर गया। सो एक टारगेट रेजिस्टेंस रीच हुआ है, सो थोड़ा काफी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है एंट्री के बाद।
So I think I'll square off some of the position again. जो अच्छा profit में we entered once again at above 24 again yesterday at the beginning. So we are sitting on a good gain. So I'll try to square it off and see. मेरा focus रहा है gold, so I'll keep looking at gold. But silver is good too. I'm also looking strongly at silver. ये रहा हमारा ओवरऑल पिक्चर करेंसी का। इसके साथ साथ हम लोग एक बार करेंसी मीटर को देखेंगे। विल लुक एट इट टू सी व्हाट इज राइजिंग, व्हाट इज फॉलिंग, किस टाइप ऑफ ट्रेड बन सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर के हिसाब से। यूरो इज राइजिंग, सो यूरो में पोजीशन लेना येस्टरडे वाज गुड। यूएस डॉलर इज कमिंग बैक। वीकनेस जो दिख रहा है जापानीज येन इज द सिग्निफिकेंटली वीक. So pound, yen, euro, all no, euro is negative down. So dollar is a comeback story today. दिख रहा है dollar is a significant comeback. INR is flattish but bearish. Gold is marginally down, falling, and silver is rising. Silver rising mode में है. I think it will go up. It has potential to go up further. अब हम लोग आ जाएंगे कमोडिटी मार्केट में और उसके लिए सेटअप को चेंज कर लेंगे टू कमोडिटी। एंड इसमें जो कल मौका मिला था हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे। आई होप यू हैव एंटर्ड द पोजीशन। वी हैव मेंशन्ड द लेवल एज वेल, बट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मूव, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है कल। ये रहा, इट वाज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मूव फ्रॉम कॉपर। बट हमारा लेवल जब क्लैरिटी था, कॉपर वाज हिंटिंग स्ट्रेंथ, और मैंने डिस्कस किया था कि आई एम नॉट रेडी टू कॉन्फिडेंट इनफ टू go long on copper unless this resistance zone is cleared. So once 738 is clear, we could go long into copper, and copper significantly shot up. First of all, this move was based on event. I entered, but I did not expect this kind of up move. And when I went back, it was a news-based move. Top of the Chinese copper smelters who are responsible for usable copper production to the tune of 50% of global have come to a voluntary agreement, whereas no particular amount means quantity was mentioned, but they have decided to reduce the copper main usable copper production. So copper का ore मिलता है, ore जाता है एक smelter में, like Jiangxi Copper is one of the biggest smelter they run. There is other China Copper as well. So they have come together to some kind of consensus. They are going to, like OPEC, they are going to cut production, and the copper price has shot up. सो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है कॉपर का चार्ट में एक बार वीकली में दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। काइंडली लुक एट दिस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एक बार ब्रेक हो जाए 745 746 का, वी आर जो यहाँ पे ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है कॉपर का। अगर एक्चुअल प्राइस देखिए, इट हैज गॉन अबव द लेवल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 746, एंड कॉपर एज क्लोजिंग अबव इट। वेरी लाइकली नेक्स्ट मूव विल बी 779 एरिया। सो कॉपर का बुल रन लग ही रहा है कि इट कुड बी अ बिगिनिंग। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन बनाने के बाद इट इज ट्राइंग टू मूव हायर। Zinc, we are waiting for similar kind of break, but zinc did not break yet. जो copper में break मिला है, that is largely zinc में ये जो level है, mostly we can see a big move today, but so far nothing. Let's come down to other two energy products. One is crude oil. Crude oil is, first of all, crude oil I could not enter yesterday क्योंकि जो मेरा लेवल था it did not break out. अगर हम लोग international crude oil देखेंगे, crude is trying to break this very important level of $79, and it is still sustaining, so far sustaining above that. इंडिया में जो लेवल था क्रूड ऑयल का 6,600, that has not been broken yet. Once it starts closing above 6,600,
I will go for one round of FOMO quantity with an initial target of 6940. Zada quantities I'll not start off because it has been a zigzag mode and previous breakout from this level has failed. अब हम लोग जाएंगे नेचुरल गैस में. नेचुरल गैस आफ्टर द बाई मूव इट हैज टर्न्ड द कॉर्नर, फिर से सेल ऑफ का सिग्नल आ रहा है. दिस इज अ सेल रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी था इस दिन 12th of March. अब आपको ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे बिलो दिस 131. वंस इज मूव दैट विल बी अ ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी. करंटली हम लोग जो अपॉर्चुनिटी दिखा दैट इज मोर ऑफ अ सेल रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटी, तो सेल के तरफ ही थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा. बट केयरफुली देखा जाए तो प्रेफर्ड ट्रेड ट्रेंड के हिसाब से आ रहा है बाय सपोर्ट और सेल रेजिस्टेंस. सो हो सके ना ब्रेक डाउन हो, इट माइट फॉल टू टुवर्ड्स 131 एंड देन बाउंस बैक. प्रोबेबिलिटी वाइज मार्केट जो है वो बियरिश रेंज हो चुका है. 36% रेंज प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 57%. सो ये रहे ओवरऑल काइंड ऑफ ए पिक्चर जो करेंसी कमोडिटी का कौन सा ट्रेड मैं सोच रहा हूं. टू समराइज, यूरो यूएसडी हैव इंक्रीज पोजीशन, जीबीपी यूएसडी जीबीपी आईएनआर री एंट्री में कम टुडे, JPY INR still in waiting mode, euro yen pound yen no trade, waiting on the sideline. Focused on gold, exit कल किए थे, I've discussed exit before the data. कल रात को फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिला है, री एंटर्ड गोल्ड अगेन. सो आई एम लुकिंग फॉर इफ द ब्रेकआउट इज कमिंग और नॉट, और नहीं तो फ्लैट लाइन का ब्रेकडाउन से आई विल एग्जिट गोल्ड. सिल्वर आई एंटर्ड, इट गेव ए स्ट्रॉन्ग मूव एंड सो एक प्रॉफिट बुकिंग के एरिया पे पहुंच गया है. 25 to 30% I will remove and I will wait and watch to see. क्रूड ऑयल न्यू अपॉर्चुनिटीज आई एंटर 6600. कॉपर हम लोग बात किए थे री एंट्री का ऑलरेडी 730 के ऊपर, द ट्रेड इज इन प्रॉफिट. एंड नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं कि जिंक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं केयरफुली कि कहां ब्रेक हो रहा है. वेरी लाइकली वी विल इंक्रीज द फोमो पोजीशन अबव आवर 225 क्लोज. जिंक कैन गो अप फर्दर. Crude oil I've discussed. Natural gas, you can enter. Natural gas I did not enter actually, but this was opportunity for a sell resistance since मेरा focus दूसरे तरफ था, तो this trade थोड़ा बहुत miss ही हो गया. So let's see how the rest of the things go. I hope ये वीडियो से आपको help हो रहा है. If it's help हो रहा है, don't forget to like and subscribe. All the best from my side, and once again, happy trading.